ready for the next game. Way ahead of our time. Hello and welcome back, all of you, to our post match analysis of the two big matches that we've had today. मैं देख रही हूँ कौन कौन यहाँ पे स्माइल कर रहा है, कौन खुश है, कौन दुखी है. हमारे साथ देवाशीष, जॉयदीप और रीमा जी फिर से आ चुके हैं. वेल, आई थिंक लेट्स टॉक अबाउट द मैच विच जस्ट गॉट ओवर, गुजरात वर्सेस दिल्ली. तो जो एक्सपेक्टेड था वो हुआ या नहीं? स्टार्ट करते हैं रीमा जी से. एक्सपेक्टेशन तो कुछ हो रही थी, लेकिन गुजरात टाइटंस ने जिस तरह से आज बॉलिंग किया, बैटिंग हालांकि मैं अभी भी कहूंगी कि इतना अच्छा नहीं हुआ था उनका. दिल्ली ने फिर एक गलती की. देखिए, टॉस जीत रहे हैं, पहले बॉलिंग का कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको ड्यू फैक्टर ऐसा लग रहा है, लेकिन विकेट बहुत अच्छा था. अगर ड्यू फैक्टर ज्यादा नहीं हो रहा, आज थोड़ा कम था, तो शायद आप पहले बैटिंग कर सकते हैं. और क्योंकि दोनों ही मैचेस ना, आज टॉस जीत के पहले फील्डिंग जिसने लिया वो टीम हारी, तो कहीं ना कहीं दिल्ली का भी एक प्रॉब्लम रहा है. चेस अच्छा से करना चाहते हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर में वो स्टार्टिंग नहीं मिल पा रही है जो पावर प्ले में चाहिए होती है. फिर एक पार्टनरशिप 3 विकेट गिर जाती है, और फिर उसके बाद लास्ट तक अगर आप छोड़ेंगे ना, तो फिर ये बॉलर्स का गेम है. और जिस तरह से आज फर्गुसन ने बॉलिंग की है, आई मीन स्पीड, इनका पेस अटैक देखिए. आई मीन हार्दिक पांड्या 141 ने बॉल डाली है. अच्छी बात क्या थी, ओपनिंग बॉल डाला. वरुण एरन क्विक थे, फर्गुसन क्विक थे. इतना अच्छा पेस अटैक था, तो वहां पे शायद भारी पड़ गई Shami, गुजरात टाइटंस. Mohammad Shami, Shami. absolutely. I think ओह Mohammad या Shami, शमी, मोहम्मद शमी. Pandya, Rashid Khan, Ferguson, they have all played their part today. एब्सोल्युटली, इसमें कोई डाउट ही नहीं है. और इसीलिए तो कहीं ना कहीं वो टोटल शॉट पड़ा. द मोमेंट ऋषभ पंत की विकेट गई, पावल ने थोड़ा बैटिंग करने की कोशिश किया, लेकिन उसके बाद वापसी का मौका नहीं दिया. सारे पेसर्स ने आज बहुत अच्छी बॉलिंग करी. That's exactly right. Yes, Joyda, what do you have to say? Yeah, I thought, this Delhi team compared to the last couple of years, the bankers are missing. In these sort of games, you need somebody to get a 70 in 50 balls. Correct. जो शिखर धवन करता था, श्रेयस अय्यर करता था. So there are a lot of flamboyant players here. जिस दिन पृथ्वी शॉ खेलेगा किसी का दरकार नहीं होगा, जिस दिन ऋषभ पंत खेलेगा और किसी का दरकार नहीं होगा. बट जिस दिन वो खेलेगा, व्हाट इज डे इन डे आउट, 14 मैच है, उसमें आपको बिल्कुल. टॉप 4 में आना है. सो वो जो बिल्कुल. बैंकर्स होते हैं ना, डेविड वार्नर आने से ये टीम बदल जाएगा, बिकॉज ही इज अ हाँ, हाँ. बैंकर. ही विल और नेक्स्ट ही मैच में विल वो अवेलेबल प्लान. भी है, जयदीप. हाँ, एग्जैक्टली. व्हाट आई एम सेइंग इज द ब्रांड ऑफ क्रिकेट ही प्लेज, he will take his chances. मुझे लग रहा है he is totally in sync with what is required. क्या होने वाला है, क्या बॉल डालने वाला है, क्या फील्ड है. अगर इधर डालेगा तो ये खेलूंगा, अगर ये डाल रहा है तो मैं डिफेंस कर दूंगा. इट्स नॉट दैट मैं हर बॉल मारूंगा और देखता हूँ क्या होता है. There's a lot more planning. When you're a complete player, when you're a banker, then you have more than one option to a ball. Right now, it's looking like they have only one option to the ball. मारता हूँ, अगर लग गया तो nothing like it. So that's a bit of a hit and miss. And today, with such a firepower, they lost out by 15. I think the turning point was the run out of Lalit. But that Yeah. apart, this run, these sort of pitches, and I agree with Rimaji, it's a superb wicket to bat on. This is probably below par for score. Yeah. So ये Yeah. चेज हो जाना चाहिए. गेटेबल था, पर लेकिन उसके लिए गेटेबल था. पार्टनरशिप चाहिए, और एक किसी को तो 70 बनाना पड़ेगा. सब 25, 20, 22 बनाओगे तो नहीं होगा. एक 70 बनाओगे, दो आदमी 30 बनाएगा, एक एंड में आके 10 बॉल में 18 कर देगा, जीत जाओगे. वो नहीं दिखा आज. बिल्कुल. और स्पेशली आई आपका थिंक टॉप अर्ली 3 विकेट. जो होता है, हाँ. मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी. जब टॉप 3 जयदीप कुछ करेंगे नहीं, तो आप मिडिल ऑर्डर पे इतना डिपेंडेंट नहीं रह सकते. फिर हम कहेंगे Yeah. ललित का वो एब्सोल्युटली. विकेट बैंग टर्निंग ऑन. पॉइंट था, वही या मैं. फिर पंत की वो विकेट थी, वो हाँ. इंपॉर्टेंट थी. लेकिन हर मैच में आपको लोअर या मिडिल ऑर्डर पर जाए, ऐसा होगा नहीं. ये आईपीएल है बॉस, इसमें बहुत That है. is why I always said that Shikhar Dhawan is a big miss in this team. वो 600 रन करने वाला प्लेयर है हर साल. 600 रन तो एक मैच में होता नहीं, ना 5 मैच में होता है. 600 रन मतलब 10, 12, 11 मैच में रन बनाता है, उसका 600 रन होता है. That's why he's a banker. बिल्कुल. एंड आई टोटली अग्री विद रीमा जी कि आप हमेशा अपने लोअर ऑर्डर पे रिलाई नहीं कर सकते. एवरी टाइम ललित यादव एंड अक्षर पटेल इज नॉट गोइंग टू सेव यू. सो योर टॉप ऑर्डर नीड्स टू स्टेप अप एंड परफॉर्म. और एज वी वर मेंशनिंग, गुजरात की बॉलिंग तो बहुत सही रही. एवरीवन प्लेड देयर पार्ट. लेट्स टॉक अबाउट हार्दिक पांड्या who's got back into his form with his bowling. We saw Ferguson जो phenomenal थे आज. देवाशीष, your thoughts? Yeah, absolutely. Hardik, it's heartening for the Indian fans to see him bowl. पिछले मैच में भी अपना पूरा कोटा
बॉलिंग डाला और आज उसने पहला नया बॉल लिया, सेकंड ओवर ही उन्होंने आया अटैक में और पहले बॉल पे उसने विकेट लिया। तो आई थिंक दैट ऑगर्स वेल फॉर द इंडियन टीम, क्योंकि देखिए सामने बहुत सारे T20 मैचेस और वर्ल्ड कप है जो सबसे अहम है। तो आई थिंक इट डज ऑगर वेल। और खास एक चीज मैं बताना चाहता हूँ जो मैं नोटिस किया कि आज जो गुजरात का बैटर्स ने दे प्लेड आउट द स्पिनर्स वेरी वेल। अक्सर और जो अश्विन का जो 8 ओवर है, कुलदीप का जो 8 ओवर था, वो बहुत अच्छा खेल दिया, क्योंकि 69 रन किया 8 ओवर में, सिर्फ एक ही विकेट दिया। तो आई थिंक तो दैट आई थिंक दैट वाज आल्सो अ की पॉइंट। और ऑब्वियसली द वे हार्दिक ने कैप्टेंसी भी किया to Yes. bring the bowling changes, the reshuffling the bowling. So I think it's turning out that the Gujarat Titans is really looking to be a potent attack. I agree. I think initially the big wicket was lost of Matthew Wade and Vijay Shankar भी नहीं टिक पाए क्रीज पे, लेकिन वो शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या की जो पार्टनरशिप थी, दैट वाज रियली गुड टू सी कि वो लोग सेंसिबली खेल रहे थे, not playing any loose shots, any risky shots, and playing sensible cricket. And then I think at the point where they thought कि अब they should start firing, that's where Hardik Pandya lost his wicket. Right, Rima ji? एब्सोल्युटली। देखिए गिल ने आज जो बैटिंग किया ना, इसे हम इसी की हम उम्मीद करते हैं। ये ऐसे एक प्लेयर मुझे लगते हैं जो तीनों फॉर्मेट खेलने चाहिए। कंसिस्टेंसी देखना चाहूंगी क्योंकि नाम इनका काफी आया है, इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल चुके हैं, थोड़ा इंजरी प्रोन भी रह चुके हैं, लेकिन अब फुली फिट नजर आ रहे हैं और एक थोड़े और स्ट्रॉन्गर नजर आ रहे हैं। जिस तरह से हार्दिक पांड्या हम देख रहे हैं बॉलिंग में एफर्ट कर रहे हैं, अगर आप गिल की भी फिजिक देखेंगे ना, थोड़े बेटर लग रहे हैं, फिजिकली फिट लग रहे हैं। और जो आज उन्होंने शॉट्स खेली आउटस्टैंडिंग, वो शुरुआत थी और अच्छा था कि 50 के बाद कंटिन्यू किया। हार्ड लग था, सेंचुरी आज डिजर्व करते थे अगर इस तरह की इनिंग रोज-रोज आप खेलेंगे नहीं, बट बहुत अच्छी इनिंग थी और हार्दिक ने भी अच्छा पार्ट प्ले किया। लेकिन थोड़ा और बैटिंग में मैं एफर्ट देखना चाहूँगी कि हर बार आपको 1-2 बैटर नहीं, 170 रन आने वाले टाइम पे आपको मैच जिताएँगे नहीं, आपको 200 के आस-पास करना पड़ेगा। बट ओवरऑल इट इज़ अ गुड टीम, सॉलिड टीम कह सकते हैं, क्योंकि आप अगर 170 भी बना रहे हैं तो आपके पास ऐसे बॉलर्स हैं जो उसको डिफेंड कर सकते हैं। अगर आप फर्ग्यूसन के आज विकेट देखेंगे, शॉ, मनदीप, पंत, अक्सर, मतलब मिडल ऑर्डर में नए बॉल से विकेट लिए, मिडल ऑर्डर में भी आके विकेट लिया, पार्टनरशिप ब्रेकर है, तो इनके पास वो सारा मसाला है जो एक अच्छी सब्जी बना सकता है, आपको मैच जिता सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। थोड़ा-सा लेट्स टॉक अबाउट Delhi's bowling because we had Mustafizur Rahman joining them today, and I think that he added a lot of strength to it. Took 3 wickets, 24 runs दिए 4 overs में. Joyda, what have you got to say? Yeah, he's a special bowler because he has got balls. He's got variation. He, like Harshal Patel, has a lot of slower balls where there's no change in action. A lot of times there is a change in action the batters can make out. And I was asking some players who have played Harshal Patel in IPL and domestic cricket, and I was asking them what makes him special. Slow ball is a slow ball. What makes him special? He says there is no change in his hand speed. There are otherwise even at delivery point the others slow down, but for him it's an absolute full motion. And in that, he's got 3 slow balls at 3 different paces. We talk about slower balls. Yesterday, Umesh Yadav bowled a ball 141. Next one was 105. That's a slower ball. 127 and 119 is not a slower ball. There has to be a substantial dip in the pace or difference in pace. Even when you bowl a slower ball and the next ball is a quick one, it's got to be 20, 25 kilometers. If it's 5-7, it's not a slower ball. So Harshal Patel, what he has is, and similarly Mustafizur, he's got the back of the hand. He has a bit of an odd action. So he also has this special ability to be able to bowl a couple of times of slower balls without any hint. And in between the slip in the quick one, then you're waiting. Is it the quick one? Is it the slow one? And as a batter, as Yumaji will say, you always want to be for the quick one, because otherwise you'll be late. Yeah, absolutely. Well, that was that, and then Gujarat Titans took this one away, and we'll see what happens in future with these two teams, Delhi and Gujarat. But moving on to the first match of the day, हमारे Rajasthan Royals or Mumbai Indians, right? I think it was Joss Butler's day, and it was his game. है ना, रीमा जी? I think her video is stuck. Debashish? Yeah, absolutely. It was Josh Butler show all the way today. Yeah. क्योंकि जिस तरह से he took the bowlers to the cleaners, means one thing for sure कि this Rajasthan Royals side does is looking a very very strong contender, at least for the first 2 matches. जिस तरह से उन्होंने defend किया,
and True. the batting looks ominous, which Samsung also striking good Exactly. forms, because there was a question mark whether he would be consistent. Now हमारा इस platform में ही हमने discuss किया कि the biggest concern for Samsung is consistency, but वो अभी तक तो फिलहाल both the matches he has done well, और खास करके Butler, he was just out of the world. The strokes he played, the way he paced his innings was True. unbelievable. So Yeah, I and think, yeah, yeah, please go on. yeah, वही मैं कह रहा हूँ कि the way he placed innings was just out of the world. So and you know Joyda, you were also mentioning the other day कि हर टीम की बैटिंग में भी वो आपके top 2-3 players होने चाहिए who should get that total, and I think that's what happened today with Joss Butler, of course, who Hmm. stuck around till the end, and then we had Hetmyer and Sanju Samson contributing their bit to get that total, and I think target हमेशा वही था जॉस बटलर को आउट करने का. बुमराह और टिमाल मिल्स, आई थिंक उन्होंने अच्छा किया, विकेट्स लिए, लेकिन वो उनकी विकेट ले नहीं पा रहे थे, और बाय द टाइम जब उन्होंने बहुत सारे विकेट्स लेना शुरू किया तब तक द डैमेज वाज डन, है ना रीमा जी? Yeah. Yeah, he's a game-changing player, Priya, as we know. See, these sort of players, on their day, they'll beat you on their own. And you, as Absolutely. an opponent, just pray that, it's not against you. So, when Yeah. a David Warner comes, when somebody like a Prithvi Shaw comes, Shikhar Dhawan comes, Rohit Sharma comes, Shubman Gill today, the sort of knocks they play, this is the reason why they are batting at the top. This is the why they go at big bucks. This is the why they are the ones who are playing for their country. The reason is that they can, and obviously the ones that do it more consistently are the ones who are known to be legends, the ones who do it once in a while or not that consistently, like a Prithvi yet. He's one in the making. But I think, in with more age and game time, he will obviously get better. He will learn. He will play with the David Warner and say, oh my God, look at him. He's got a six, but next ball is taking a single, it's gone to the other end. He's not trying to hit every ball for six. So, when you're young and it's all, you think differently as you age and you mature, you learn the tricks of the trade. And Josh Butler is one such player. That's the reason why Rajasthan have stuck with him, retained him, top of the order. They give him 14 and he says, okay, go and win us 5 games on your own. The rest contribute to the win. Yeah, absolutely. Hmm. Taking the whole True. responsibility on his shoulders. He was phenomenal today. And रीमा जी, आपको राजस्थान रॉयल्स की जीत भी मिल गई, जॉस बटलर की इनिंग्स देखने को भी मिल गई, but at the same time you also wanted to see Bumrah get back into action, and I think he Oh, did today. सी वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया इन द वर्ल्ड हम कह सकते हैं, और आज वो वॉकर्स दिखे स्पॉट ऑन थे. बाद में उन्होंने बटलर को भी तकलीफ दी थी, वो अलग बात है, उनको विकेट नहीं मिले. ऐसे ही होता है जब आपका दिन होता है ना क्रिकेट में, आपको थोड़ा सा लक चाहिए होता है, और वो बुमराह जगह पे डाल रहे थे लेकिन विकेट नहीं मिला. लेकिन 4 ओवर 17 रन 3 विकेट्स, इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं? इतना अच्छा शुरुआत दिया, लेकिन थोड़ा वीक लिंक अगर मुंबई में भी दिख रहा है ना, तो उनका बॉलिंग लाइनअप दिख रहा है. आप बुमराह पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते कि वो आपको डेली विकेट दिलाएं, पहले भी बाद में भी आके वही आपका मैच विनर बने. एक से आप ये टीम गेम नहीं जीत सकते, इसलिए कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन में मुझे अभी भी लगता है जल्दी काम करना होगा, क्योंकि अभी तक कोई मैच जीती नहीं है मुंबई इंडियंस. और थोड़ा सा टॉस के बाद जो डिसीजन लेते हैं, क्योंकि आपकी बॉलिंग इतना स्ट्रांग नजर नहीं आ रही, तो आप बैटिंग पे आइए ना. बैटिंग आपकी स्ट्रेंथ है. ईशान किशन देखिए कितने अच्छे फॉर्म में है, और एक एक फिर से एक स्टार निकल के आ रहा है. तिलक वर्मा जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग अंडर 19 का वो प्लेयर है, और जिस तरीके से उन्होंने पेस को खेला और उसके बाद स्पिनर्स को खेला, टाइमिंग मुझे लगता है उनकी ताकत है, और फिर उनको पावर की जरूरत नहीं है. क्लीन हिटर लगे और टेक्निकली साउंड लगे, ऐसा नहीं था कि वो स्लॉक कर रहे थे. आई मीन बैटिंग पे चाहिए, आप अपने बैटिंग पे खेलिए. जब तक आपका बॉलिंग कॉम्बिनेशन सेट नहीं होता ना, मुझे लगता है मुंबई को वापस अपने बैटिंग पे ही अब दाव लगाना चाहिए. बिल्कुल, आई थिंक यू आर बैंग ऑन विद इट कि ईशान किशन तो है ही, वो फॉर्म में चल रहे हैं, आज भी उन्होंने परफॉर्म किया है. तिलक वर्मा गेव हिम क्वाइट अ हैंड विद हिज नॉक. रोहित शर्मा इतना परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन व्हाट आई थॉट वाज देयर वाज अ लिटिल मोर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द लोअर ऑर्डर. कायरन पोलार्ड, टिम डेविड, अगर थोड़ा सा इफ दे कुड फायर, इट प्रोबेबली दे कुड हैव इवन चेज्ड डाउन दैट टोटल. व्हाट डू यू हैव टू से, देबाशीष? Yeah, absolutely. Because this was ready-made for Karen Pollard. Means if you talk about Karen Pollard just 1, 2, 3 years down the line, means this is what he was made up for. Means ऐसे परिस्थिति में कायलन पोलार्ड invariably would have we know matches, क्योंकि he relishes this type of situations, क्योंकि 28 रन कुछ 17 बॉल था क्या, इवन बिफोर दैट 56 रन 28 बॉल्स.
So I think these were tailor-made for Karen Pollard. I'm talking about Karen Pollard in his prime, 2 years down the line. Hmm. But I don't know what was the logic behind Mumbai retaining Karen Pollard. Means obviously, with due respect to Karen Pollard, he has been what to say. Means he has been a real threat as far as T20 cricket is concerned. But then जिस तरह से युजवेंद्र चहल ने बॉल किया, इधर बात करनी है युजवेंद्र चहल के बारे में, क्योंकि 16 ओवर में वो जो he could have got that hat trick. Hat-trick. अगर करुण नायर वो कैच ले लिया होता स्लिप में, he could have got that hat trick. But then ठीक है, जिस तरह से चहल बॉलिंग डाल रहा है, क्योंकि चहल अश्विन जो कॉम्बो वॉक कर रहा है, आई थिंक दिस इज इवन लुकिंग मोर थ्रेटनिंग, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स का जो बॉलिंग अटैक है, बोल्ट है, इसके बाद आज साइनी भी बहुत अच्छे, प्रसिद्ध कृष्णा, इसके ऊपर वो जो स्पिन बॉलिंग जो डुओ है, तो आई थिंक दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग वेरी वेल, दे आर लुकिंग एज अ टीम. मगर एक चीज में रीमा जी से मैं पूछना, जयदीप दा सीनियर है, जयदीप दा अच्छा बोल सकते हैं कि आई स्टिल डू बिलीव कि राजस्थान रॉयल्स और भी पोटेंट लगेगा अगर देवदत्त पडिक्कल को अगर वो ऊपर भेजे इंस्टेड ऑफ यशस्वी जायसवाल, क्योंकि देखिए यशस्वी जायसवाल अभी भी उतना एक्सपीरियंस नहीं है, हालांकि इज टू गुड अ बैटर, बट देन देवदत्त पडिक्कल द वे ही प्लेड लास्ट ईयर फॉर आरसीबी, आई थिंक वो that would have added more power to that batting, क्योंकि देखिए 1 2 3 अगर obviously संजू सैमसन is also striking form, तो I think that could have been a area to rethink as far as the Rajasthan Royals team management is concerned. Ji Joyda, your thoughts? I think is yeah. Yeah, I think with Mumbai, what's happening is that the bowling, they're really struggling. See, every IPL team, successful team, have had a very good bowling, and with Mumbai, I think with Rahul Shah gone, with Krunal gone, they're feeling the heat in the bowling. And whichever team has won the IPL, whether it's KKR, whether it's Chennai and Mumbai, the three teams that have won multiple times, you see the bowling. The Malingas, even CSK and then KKR. So you cannot, and that is putting extra pressure on the batting right now. They feel they need to get a little more than what is par, and that can happen. The opposite can happen when the batting is weak and the bowlers feel that we need to get them all out at 140, which is not possible on this pitch. तो उसमें 190 निकल जा रहा है, 170 से 20 रन ऊपर. So I think Mumbai and, like I was saying, Mumbai and Delhi are two teams which are looking considerably weakened compared to the last 3 years, and that's showing. And I agree with Karen Pollard and all that. It does catch up. I mean, he'll still come and play a few knocks in your games, but that is where you feel that you got to take a call. And obviously they've seen enough. Otherwise, they've let a lot of people also go. It's not easy letting Hardik Pandya go, But if they've done it, they obviously have seen more about Kieran Pollard, and I'm sure his best is yet to come. I mean, it's probably not at his best at the moment. Yeah, for sure. Rima ji, any thoughts to add? मुझे अभी भी लगता है जैसे देवशीष ने कहा था कि यशस्वी जायसवाल को ओपन करना चाहिए या देवदत्त पडिक्कल को. एक मैच हम शायद और देवदत्त को जायसवाल को देख सकते हैं ओपनिंग करा के, बट अगर तभी भी वो नहीं चलते तो मुझे लगता है देवदत्त पडिक्कल को ओपन आना चाहिए और उसके बाद नंबर 3 पे सैमसंग जो खेल रहे हैं वो खेलते रहेंगे और नीचे फिर आप एक मिडिल ऑर्डर ऐड कर सकते हैं या फिर ऑलराउंडर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आज भी स्टार्ट जिस तरीके से हुई थी ना, जो बटलर ने स्टार्ट दिलवाई, जो पावर प्ले में बैटिंग देखने को मिला, उसके बाद सैमसंग ने भी थोड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, तो शायद मुझे अभी भी लग रहा था कि फिनिश उतने अच्छे से नहीं हुआ जितने अच्छे से स्टार्ट हुआ था. तो शायद ये अगर फिनिश भी अच्छा होता तो 220 215 के आसपास हो सकता था. और आने वाले टाइम में ये टूर्नामेंट बहुत लंबा है, देखिए बाकी टीम भी फॉर्म में वापसी आएगी और फॉर्म आती जाती रहेगी इस टूर्नामेंट में. जरूरी नहीं है कि जैसे आपने शुरुआत की है वैसे आप एंड तक रहेंगे. इसमें कई दूसरी टीम के प्लेयर भी ऐसे जो फॉर्म पिक करेंगे, उस टाइम पे आपको ये 20-20 रन जो आप अभी मिस करें ना, वो नेट रन रेट में काउंट होंगे. और फिर कहीं ना कहीं कौन सा बैटर आपका फॉर्म में आ रहा है, इंजरी बीच में आती है, बहुत सारी ऐसे चीजें होती हैं. तो आप जितनी जल्दी अपना प्लेइंग कॉम्बिनेशन तय कर लेंगे. और देवदत्त पडिक्कल का स्ट्रेंथ क्या है? ओपनिंग. एक माइंडसेट से उतरता है ओपनिंग. बैंगलोर के लिए वो ओपन करते थे, डोमेस्टिक क्रिकेट में कर्नाटक के लिए वो ओपन करते हैं. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप उनको उनकी जगह पे छोड़ दीजिए और फ्री हैंड दे दीजिए. मुझे लगता है उनके पास And बहुत से also, रन हैं जो आरआर को दे सकते हैं. Rima ji, just to add to that, he batted at 4 in the last game, batted at 3 today. So it's obviously going to show that, and Sanju has given number 3 away. I know Sanju loves batting at 3,
as a captain. So obviously there is that little bit of you can make out that Devdutt Padikkal is not playing in his position, and that's और why कहीं ना कहीं आप probably हर Sanju हर मैच में sacrificed. चेंज करेंगे तो माइंडसेट भी चेंज होता है। आज शायद लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन के चक्कर में उनको ऊपर भेजा था, लेकिन एक प्लेयर के माइंड में आप डाउट क्रिएट करते हैं कि जाइए आप आज 3 पे खेलिए, अब आप 4 पे खेलिए, नहीं जायसवाल नहीं चल रहा, अब आप ओपनिंग कीजिए। आई मीन जो जिसकी जगह है उसको दे दीजिए और फ्री हैंड दे दीजिए। अब जैसे बटलर को ऊपर किया, आपने बोला कि जाइए, ये पावर प्ले आपका है, आपके पास लाइसेंस है, आप एक जैसे अगर खेलना चाहते हैं खेलिए। सिमिलरली वैसी कुशनिंग 2-3 प्लेयर को स्पेशली टॉप ऑर्डर को देनी पड़ेगी। You make a very important point. You know, the good teams over the years don't change too many players. They'll change one for the conditions. थोड़ा green हो गया तो सीमर खिला लिया, थोड़ा bare हो गया तो spinner खिला लिया. But when we saw Punjab last year, 4 changes in one game because they've lost 2 games on the trot. So you have to show इनके लिए हुआ है. So that's the reason why stability is very important, because especially for a young player. You know, even if you're a seasoned campaigner, वो फिर भी manage कर लेगा. लेकिन for a young player like Devdutt Padikkal, stability and knowing your role is very, very important. Yeah, True. 100%. Totally. Absolutely. Yeah. Well, I think on that note, we will close, but we have a video to share. Lekin before we go on to that video, I want to take a quick vote on tomorrow's match. Let's start with Devashish. CSK versus Punjab है ना कल? हाँ, पंजाब है। क्या क्या? देखिए, थोड़ा हैरानी की बात है कि 2 मोस्ट सक्सेसफुल टीम्स 2 पहला मैच हार गया, मुंबई और चेन्नई सुपर किंग्स। तो हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि MS धोनी और रविंद्र जडेजा शो सम इंस्पिरेशन, और we want Chennai to do well. At least I would put my money on Chennai Super Kings to come good against Punjab Kings tomorrow. I like that. रीमा जी मिल गया, ये भी मिल गया, रीमा जी का तो ये भी मिल गया। ठीक है, CSK जोएदा वेदा थे, ये भी मिल गया। I'm going with Punjab. I have to ये go with Punjab. ये हमेशा अपोजिट साइड पे चलेंगे, ये ऐसे चलेंगे, कभी ऐसे नहीं चलेंगे। और सिंस अभी स्क्रीन ऐसे डिवाइडेड है तो आज मैं जोएदा के साथ हूँ। Nice, nice. नहीं, आई एम ऑफ कोर्स अ फैन ऑफ धोनी। मतलब ये कुछ कैसे है ही फैन नहीं। है कि मैं धोनी की फैन हूँ लेकिन पंजाब जीते, मैं धोनी की फैन हूँ लेकिन आरसीबी जीते। आई मीन ये फैन नहीं होते, धोखेबाज कहलाते हैं। अरे See, यार, all these teams are so closely knit, except 1 or 2 teams maybe. All of them are closely knit. We are picking one, just thinking that आज भी जो match, it could have gone. Delhi lost by 15 runs. They could have easily won this game. For some banter and for some fun, we are picking sides. But in May, you cannot pick anybody. You have your favorites. The whole world loves Dhoni. Whole of India loves Dhoni. But all I'm saying is the whole of India loves Anil Kumble, who's coach of Punjab. So all I'm saying here is that we have some fun, so we pick sides. But in May, say it's whoever plays better on the given day. There's nothing that Absolutely. separates these sides. 100%, that's true. yeah, that day will decide. The match is going to decide कौन best है. So we'll see that tomorrow. Thank you very much once again for joining me here, Devashish, Joydeep, and Reema ji. I'm going to play a video now on Shubman Gill, who has performed really well today. Go ahead and watch that, and I will see you tomorrow. Thank you. Thank Thank you. you. Good night. Thank you. Good night. Shubman, new team, new colors, new season. How are you approaching it? Very excited for this season. Obviously, as you said, new team, and it will be a new beginning for all of us. And hopefully, we can turn this into a beautiful journey. How are you approaching this new responsibility? Because now you are no longer a youngster. हम लोगों के लिए भी आपने वो स्तर पार करके आए हो। Now आपको हम लोग ऐसे देखते हैं कि शुभमन गिल equal to match winner. How are you treating that? I think it's a really good challenge for me, and मुझे वैसे भी responsibilities, I really like responsibilities, और it will be a great challenge for me. And as I said, I'm very excited for the season because it will be a different task for me in terms of what I was doing at KKR, and hopefully I'll be able to do well with Gujarat and with Gujarat as well, and hopefully as a team हम सब लोग अच्छा करेंगे, और जो लोगों की expectations है, जो हमारे fans की expectations है, उस पे हम खरा उतरेंगे। इतनी मेरी one-on-one conversations नहीं हुई है हमारा जो मैनेजमेंट है उनके साथ, बट जैसे ही हमारी यहाँ पे प्रैक्टिस शुरू होगी, मैं कल प्रैक्टिस करने जाऊंगा और मैं गैरी कर्स्टन से, आशु भाई से, हार्दिक से जैसे उनके साथ बात करूंगा, तो आई विल बी अ बिट मोर क्लियर इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम मी एज अ बैट्समैन एंड एज अ प्लेयर ऑफ गुजरात टाइटंस। दो सवाल, एक, how are you looking at Hardik as leader, because you will have to back him up clearly. आप लोग तीन, आप राशिद और हार्दिक, आप लोगों का, एंड मोहम्मद शमी को भी उस लिस्ट में मैं इंक्लूड करूंगा, आप लोग एक साथ बहुत साल खेल चुके हो।
So talk to me about that. And secondly, आशीष नेहरा एंड गैरी कर्स्टन भारत के लिए 2011 एक साथ थे, वर्ल्ड चैंपियन टीम के साथ रहे, थोड़ा सा उसके बारे में भी आप बताइए, that overall strength of the squad. I would say the overall strength of this squad, you look at Hardik and I look at Hardik, and as a player looking at Hardik and the way he plays, it gives me freedom as me as a player, how I want to play with the team. It gives me freedom to express myself as a batsman and as a player what I can do for the Gujarat team. And Ashu Bhai and Gary Kirsten, they are both someone who are so experienced in terms of what they have achieved with the country, both of them with India as well, and then Gary Kirsten what he's done with when he was playing with South Africa. तो दोनों का काफी experienced है दोनों, और दोनों Indian, आशु भाई तो obviously India से है, but Gary Kirsten he knows the Indian culture as well, how Indians approach Indian का जो हमारा Indians का जो culture होता है. Main चीज क्या होती है कि अगर कोई बाहर से especially कोई coach आता है तो उनको थोड़ा Indian culture समझने में थोड़ा time लगता है. बहुत important point. But because Gary Kirsten has been with the Indian team, and obviously we all know we won a World Cup with Gary when he was coaching the Indian team in 2011. तो वो I think वो जो एक blend है, I think that will be a really good thing for us. When you look at the overall squad, Shubman, somebody like an Abhinav Manohar जो आपसे भी सीखेंगे. At the other end, अगर हम bowling देखें, लॉकी फर्गसन, मोहम्मद शमी, यश दयाल, so real pace. So overall मैं अगर आपके बारे में आपसे पूछूं आपका टीम का स्ट्रेंथ के बारे में, उसका आपका थॉट्स? I think the way हमने सारे जो boxes tick किए हैं in terms of making our team is superb. हमारे पास काफी diverse options है, हमारे पास काफी सारे all-rounders है. We have obviously Hardik, Rashid, Rahul, Tewatia. तो हमारे पास all-rounders के भी काफी options है. We have proper pace battery. हमारे पास शमी भाई, लॉकी, जैसे आपने यश का नाम लिया, तो हमारे पास वो भी है. We have good Indian batters, and then with a mix of good international experienced players, Miller, Matthew Wade, and all those people. I think ये जो एक diverse mix है जो हमारे पास, it will be a good combination for the youngsters who are just coming in, जिनको इस साल खेलने का मौका मिलेगा.